celebrating, as we are celebrating International Literacy Day, announced by the UNESCO way back in 1966. So since then, every year we have been celebrating this day to emphasize the importance of literacy um, um, among the, especially the individuals, communities, and societies, to build the literate society. So, with this focus, various governments across the globe and various regions and organizations, individuals trying to promote the literacy among the communities. Nevertheless, so far we achieved great success, but still around 771 million people around the world persist as illiterate. And especially in coming to the Indian context, in as per the National Statistical Office survey in 2021, the Indian literacy rate is around 77.7%, with a male literacy of 84.7% and a female literacy of 70.30. Mostly, when you say literate society, it more refers to the adult population and kind of thing. When come to the literacy at the foundation level, at the school level, at children level, and as per the national education policy, you know that this is we have a new national education policy which announced in year of 2020. And as per this NEP policy, and we have a bigger agenda saying that by 2025, so covering the almost all 5 crore children in the age group between 3 to 11 years old, you know how to promote the foundation literacy through a mission mode called Nipun Bharat. When you say Nipun Bharat, Nipun it stands for National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. So this is Nipun stands for, and in the mission mode, the government of India striving for promoting this foundation literacy and numeracy among the children at early grades, especially the preschool education and the primary classes. So with this mission, we have the greater the goal, in our hands, how to fulfill this goal, So today, being International Literacy Day, the SRF Foundation thought of it is an occasion to bring the experts who have been working in this space for many years in different parts of the country, and to hear from them and also spread the awareness and also hear them, what they have been doing, what are the can somebody mute, please? So hear from them what are the challenges being faced and how we can address this issue together. So today we have three eminent panelists with us. To begin with, Mr. Amitav Virmani. So let me introduce him. And Amitav is the founder and the CEO of the Education Alliance, a non-profit organization focused on improving the quality of education in government schools. The Education Alliance works with the state governments of Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Tripura, NCT Delhi, and the South Delhi Municipal Corporation on education reform initiatives. Amitav was country director, ARC India, a UK-based NGO. Amitav and his team ran several programs focused on school leadership, English language literacy, school vouchers, and school quality assessments. Amitav holds a degree in MBA from UNC Chapel Hill, USA. He sits on the board of Children's Book Trust, Virmani Education Trust, Virmani Public School, AVPN India is chairperson, Teach for India Delhi chapter, the Blind Relief Association, Gargi College, CAPED, and the Shriram schools. With these few words, we would like to welcome Amitav. Thank you for being with us. Next panelist, Mr. Prakar Jain. Prakar is a governance and public policy professional with more than 10 years of work experience in strategy, project management, and business development roles. He is currently an associate director at Central Square Foundation and manages its portfolio of education reform programs in UP and MP, Madhya Pradesh.
Before joining Central Square Foundation, he worked in the impact consulting sector, supporting government and non-government organizations on critical urban development and environmental issues. He holds a MSc degree from University of Oxford and a BTech degree from IIT Delhi. Welcome, Prakar. And we have a third panelist, Mr. Parmos Sharma. Mr. Parmos Sharma is working with Haryana Education Department as a State Education Officer. Right to education and quality education is focused on the foundation literacy and numeracy. He has a 12 plus years of experience in education sector and shaping young minds to be great leaders for future. He holds a master's degree in business administration and project management. So, with these few words, we welcome all of you, the three panelists, to share their experience and thoughts. To begin with, I request Mr. Amitav to what he feels about when talking about the foundation literacy and numeracy, the learning gap in the country are with specific to states, where he is also working there. And how do you see about this learning gap, Amitav, from your perspective? Thank you, Suresh, and thank you to the SRF Foundation for organizing this very important panel today. I think it is a important conversation for the country to be having at this stage because we've embarked on a very important initiative with Nippon Bharat, as you rightly mentioned, which was launched by the Honorable Prime Minister last year. As you also said, in the new education policy, foundational literacy and numeracy plays an integral role in education, in K-12 education. Two things that have happened there. One is, especially with regard to NEP, is that they have clubbed early childhood education now, or I should say, included 2 years of early childhood education as part of the foundational years, which I think is critical. And second is the launch of the Nippon Bharat initiative post, NEP being introduced, where now states are expected to work in mission mode. And I think it's important when you look at a mission as opposed to just a program that typically have happened in states. It's not to say that states haven't focused on early childhood education in the past, but it hasn't been done in mission mode. The reason we're doing this in mission mode is partly because of where we are in terms of the gaps of learning, Suresh. And I'd just like to share a few numbers. First and foremost, I think it's very clear that foundational literacy and numeracy at an early age is critical, because if that is not addressed, the gaps start emerging at an early age and they only accelerate and accumulate over time. So if you've not taught a child how to read by the time she is in grade 3, she certainly cannot read how to learn from grade 4 onwards, and which is why I think the importance of foundational literacy and numeracy. I think if you look at the study that was done by the Ministry of Education in 2022, where specifically they looked at 20 languages, they evaluated roughly about 86,000 children in grade 3 across 10,000 schools and 18 states. The data speaks for itself. And while it's a very comprehensive study that I encourage all the listeners to take a look at, I'll just quote a statistic specifically for Hindi as a language, and which is spoken in or taught rather in 18 states, largely the northern states. The study looked at oral reading fluency with reading comprehension as an indicator of literacy skills, right? And this was done, like I said, in 18 states and the UTs. um, the minimum criteria that they were looking at for a child, the benchmark, as defined as minimum proficiency standard, which is a global minimum proficiency standard, requires a child to read at 35 correct words per minute, CWPM, right? That is the number of correct words a child should be reading by the time she's 8 years of age. And in these 18 states across the children that were tested, only 47% of the children were able to meet
this standard, which basically means that 53% of our 8-year-olds were not able to read even at 35 correct words per minute. That's one data point. I think the second data point, which talks about the learning gap, is what was done in the National Achievement Survey, or NAS as they call it, in 2017, November 2017. So NAS is done with grades 3, 5, and 8. It was done by 22 lakh children in 2017. It was tested on 34 lakh children in 2021. And if you compare those 2 years, this was again all grades, all subjects. When I say all grades, 3, 5, and 8, all subjects. Um, the average learning achievement across all grades and subjects dropped from 58% in 2017 to 54% in 2021. So in 4 years, there was a learning loss, a significant learning loss. I think my closing point here, Suresh, is that this is not a crisis that is a result of COVID. I think the pandemic has only made it worse. This is a crisis that is accentuated because of our lack of focus on foundational skills. So when you're testing children in grades 3, 5, and 8, you're seeing poor results because we haven't been able to fix their literacy and numeracy skills in the early grades. So I think given that this data is what it is, we're in mission mode. My hope is that states are going to take this mission very seriously. I'll share later today what some of the states we're working in are doing, but I'll stop there with my thoughts. Yeah, thank you, Amitav, for giving very good insights about the status of the skills at the grade 3 level and the 5 and 8 level also. They say foundational literacy and numeracy, what we call it gives a strong foundation. If children, when they're progressing to the secondary and higher secondary level, and if the foundational itself is not that much of stronger, so it has its own impact on the next levels kind of thing. So this is a very concern for all of us. So, Prakar, what do you see about this learning gaps? What do you think about it? From the CSF, you have been working in different parts of the country. So, what is your understanding and on this learning gap, please? Yeah. So thanks, Dr. Suresh, and SRF Foundation for organizing this and for having me here. Really grateful. Um I think Mitav has gave a very good sort of context and background to this entire topic around foundational literacy and numeracy, and also shared some pretty interesting statistics, on how grave the crisis is. I'll not sort of talk about the numbers, but I think important observation, and Amitabh spoke about the National Achievement Survey, right, which the government of India does every few years to get a sense of what the learning outcome levels are in different states, different districts of the country. There are a few states like Gujarat and Madhya Pradesh and Punjab who have been doing really well in these surveys. Now, of course, one can sort of talk about the whole data reliability and integrity of many of these surveys, but that's besides the point. If you what really we do in many of these surveys is that states are almost competing against each other, and some states who are doing well, they are then patting themselves on their back that that things are going really well. While in absolute terms, when you see many of these learning outcomes and compare them against the international benchmarks, as Amita was also mentioning, the absolute numbers are pretty devastating, right? And some of these international tests like PISA and where India has participated in the past, our students have performed really bad, and so the whole point is really that whether are we just competing amongst each other and taking a relative stance, everybody is sort of at a low level, and then we are seeing who is doing better, or are we even looking at the absolute levels, right, where we should be and where we essentially where our students should be. So that's I think one important point that I want to mention about the whole learning gap situation in the country.
Yeah, thank you, Prakar. Your initial insights on the learning gap and bringing the efforts of different states at different levels, kind of thing. Pramod is with us, and he is from the system, government system, and especially as a being a program officer for the FLN and also right to education and quality education. He has been there, and he is a driving force, doing things in the state. We have been working with him for last few years. And Pramodji, what do you think about the learning gaps, especially specific to the Haryana or in general, please? It seems your mic is in mute, Pramodji. हेलो। Yes, please. थैंक यू। रेडी। लर्निंग गैप की बात करते हैं। लर्निंग गैप में हम लोग सर कोविड की जिम्मेदारी लगाते हैं। देखिए, मैं इसको 2 मिनट लेना चाहूंगा। किसी भी बच्चे के जीवन में शुरुआत के जो 2000 दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण। पैदा होने से लेकर 2000 Can दिनों you, Pramodji, can you hold the mic close to your mouth? Yeah, please. रेडी में मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी भी बच्चे के जीवन के शुरुआत के जो 2000 दिन है उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम इन 2000 दिनों के दुनिया के सबसे कठिन स्किल जिसमें बोलना है, सुनना है, हंसना है, मुस्कुराना है, खाना पीना, चलना, भावनाओं को समझना, गुस्से को समझना, प्यार को समझना, दुनिया के सबसे मुश्किल स्किल हम इन 2000 दिनों में ही सीखते हैं। और ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि 90% जो मस्तिष्क का उसका विकास शुरुआत के 2000 दिनों में ही हो जाता है। अगर मुझे आप पूछें सरकारी नजरिए से, तो सरकारी नजरिए में इन शुरुआत के 2000 दिनों का जो पढ़ना लिखना है वो सारे का सारा यूनिवर्सिटी के हवाले है, आंगनबाड़ी केंद्रों के हवाले है। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा सेट जो यूनिवर्सिटी के पास है। और यूसीडी का जब गठन किया गया, यूसीडी के पास पढ़ाने लिखाने के अलावा जितने बाकी काम है वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो सबसे पहले तो जो स्कूलों में आते, अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूँ, प्री प्राइमरी एजुकेशन का समुचित रूप से न होना सबसे बड़ा लर्निंग गैप लेके है। उसके बाद की अगर आप बात करें, अगली क्लासेस में पहुंच जाते हैं। तो अगली क्लासेस में समस्या है, देखिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मुताबिक सिलेबस जो है और स्किल डिफाइन है, उसके मुताबिक है सिलेबस में, सिलेबस के बाद फिर और क्वेश्चन के बदले है साल के अंत में 33% अंक लेके आ। तो चलिए दो डिटेंशन पॉलिसी, अगर दो डिटेंशन पॉलिसी ना भी हो तो साल के अंत में 36% ले आता है, उसको अगली क्लास में दिया जाता है। हम लोग ये स्किल Pramod लेके ji, Pramod ji, आपका वॉइस कट हो रहा है. Just you can see that once again. हम मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, yes, please. ओके, थैंक यू, सॉरी। तो हम लोग साल के एंड में बच्चे को जब अगली क्लास में भेजते हैं, तो अगली क्लास में जो बच्चा 33% नंबर लेता है वो अगली क्लास में जाता है। लेकिन हम ये नहीं माप करते, हम ये लोग मैपिंग नहीं करते कि वो उस क्लास के कितने स्किल लेके गया है। अब होता क्या है कि एक क्लास में एक सब्जेक्ट में मान लीजिए साल के एंड में उसको टोटल 20 स्किल लेके जाने हैं, तो 20 में से अगर वो 6 स्किल या 7 स्किल लेके अगली क्लास में चला जाता है, तो 13 स्किल का लॉस उसका प्रीवियस क्लास का है। फिर वो अगली क्लास में आता है, वहां भी उसको 20 स्किल लेने। तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो जब तीसरी चौथी क्लास तक जाता है तो उसके स्किल में पिछड़ जाता है। अगर आप नेस की रिपोर्ट की बात करें तो आप देखिए पहली दूसरी तीसरी में बच्चे, जब पहली में जब बच्चा आता है, पहली में गैप नहीं है, दूसरी क्लास में गैप बढ़ जाता है, तीसरी क्लास में गैप और बढ़ता है, और पांचवी का अगर गैप देखें तो बहुत जबरदस्त गैप है, और आठवीं का गैप बहुत भयंकर है। इसका मतलब क्या है कि स्कूल में बच्चा जिस काम के लिए है, स्कूल ने वो काम नहीं किया। मतलब हम लोग बच्चों को जिस काम के लिए बुलाते हैं, स्किल देने के लिए बुलाते हैं, वो स्किल नहीं दे पा रहे हैं। के अंदर महत्वपूर्ण स्थिति है जो कोविड की स्थिति आई है। अब देखिए कोविड के बाद नैस का अभी नैस आया, तो नैस की अगर आप रिपोर्ट देखें तो नैस में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने, रूरल बच्चों ने ईवीएस में अर्बन बच्चों से बेहतर किया है। जानते क्यों? क्योंकि अर्बन में लॉकडाउन का इंपैक्ट ज्यादा था,
रूरल में लॉकडाउन का इंपैक्ट कम था, रूरल में बच्चों के पास इन्वायरमेंट के साथ जुड़ के सीखने का अवसर था और अर्बन में वो अवसर नहीं था। और अगर हम बात करें सरकारी और प्राइवेट का गैप, तो सरकारी स्कूल के बच्चों ने ईवीएस में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। अगेन फिर वही है, जो पढ़े लिखे माता पिता थे जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते, वहां पर लॉकडाउन का इंपैक्ट ज्यादा था। तो जो लर्निंग, ओवरऑल जो लर्निंग गैप है, मैं मानता हूं ये सचमुच लर्निंग गैप। और अच्छी बात यह है कि सरकार विभाग फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन लेके आया है। लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन में अगर आप इस डॉक्यूमेंट देखें, दो तीन डॉक्यूमेंट है जो एफएलएन के डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर अगर विद्या प्रवेश देखें, विद्या प्रवेश के अंदर जो कॉम्पिटेंसी बताएगी वो एक कंप्लीट चीज है। सभी स्कूल, पॉलिसी मेकर, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, फाउंडेशन, सीएसआर, सब लोग मिलके अगले 3 साल हम किसी चीज में काम ना करें, अगले 3 साल हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएंगे, 5 साल के बाद जब रिजल्ट आएंगे, हमें छोटी क्लास के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी, सचमुच मैं मानता हूं लर्निंग गैप है, लेकिन इस लर्निंग गैप में सबसे कम जिम्मेवार जो है वो बच्चे हैं। उसके बाद जो जिम्मेवारी है वो अध्यापक की है, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो पॉलिसी मेकर की है, वो एनसीईआरटी की है, वो एससीईआरटी की है, एनजीओ की है, फाउंडेशन की है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। देखिए, अब टीचर को बदलना है। हम लोग कहते हैं कि टीचर चेंज के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर टीचर चेंज के लिए तैयार है, बट उसको इस बात का डर लगता है कि जब वो चेंज करेगा, तो जब वो पीछे मुड़ के देखेगा तो कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को लर्निंग गैप को मीट आउट करने के लिए इन सब चीजों पे काम करना है। एक छोटी सी चीज, अपनी इस बात को समाप्त करता हूं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 200 दिन की बात करता है। 200 दिन जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए। 800 घंटे की बात करता है। 1 से 5 के लिए ऊपर 1000 घंटे की बात करता है। क्या सचमुच हम लोग ये मैप कर सकते हैं कि बच्चे को साल में 1000 दिन मिल रहे हैं, मतलब 1000 घंटे मिल रहे हैं, यानी कि 220 दिन मिल रहे हैं। 220 दिन का मतलब है टीचर और बच्चा आमने सामने हो, सिर्फ इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए, सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए टीचर वहां मौजूद है। साल में 220 दिन भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर नॉन एकेडमिक काम का बोझ है, बाकी चीजों का बोझ है, वो हम कभी भी उसमें से घटाते या माइनस नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 220 दिन की बात छठी से 8वीं में, या 200 दिन की बात राइट टू एजुकेशन एक्ट में पहली से 5वीं की 800 घंटे की बात हो रही है, उसका मतलब यह है कि वो टीचर और वो बच्चा 800 घंटे साल में आमने सामने हो, एक दूसरे, बाकी सब चीजों को छोड़ के 800 घंटे की उसको एजुकेशन, उसको इंस्ट्रक्शन, उसको मिले। तीसरी चीज जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी, हम लोग 21वीं सदी के बच्चों को और 20वीं सदी के टीचर से और 19वीं सदी के स्कूलों में पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेकार कोशिश है। ये सदियों का गैप है। हमारे स्कूलों में जितने टीचर हैं वो इस सदी में कोई पैदा नहीं हुआ, और जितने बच्चे हमारे स्कूलों में हैं वो सारे 21वीं सदी के हैं। तो टीचर 20वीं सदी का है और बच्चा 21वीं सदी का है और स्कूल 19वीं सदी के हैं। तो हम लोगों को इस गैप को फिल करना होगा। हमें स्कूल अपग्रेड करने होंगे, कैसे? आईसीटी को लाके। हमें टीचर अपग्रेड करने होंगे, कैसे? उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देके। और हम लोगों को बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं है, बच्चे जैसे हैं बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर रेड्डी, ओवर टू यू। थैंक यू प्रमोद जी। आप जो भी कह रहा था, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, है ना, जो गैप है सिस्टम में, बस बढ़ता जा रहा है। जब बच्चों आगे क्लास जाएंगे, और टीचर को भी, है ना, शिक्षा के बारे में जो गैप है, सो सब कुछ उसको होलिस्टिकली एडजस्ट का रिजॉल्व करना है और सभी मिलकर काम करना है। सो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आगे जाने समय में मैं अमिताभ से पूछ रहा हूँ। तो मिस्टर Amitav, regarding this, as a two educational alliance, we have been working with in Madhya Pradesh, Tamil Nadu, and Tripura. So, would like to hear from your experiences, you know, promoting the FLN in those states, how we are going ahead, and so what the results you are seeing there. Sure. I think, Suresh, it's too early to talk about results, but I'll tell you about the preparation. As I was sharing with you earlier, that there is a wide variance between the preparation of states. When we got into mission mode, there's some states who jumped on the bandwagon immediately and started preparing. They started looking at the data. The study that was done by Ministry of Education, they looked at that and said, we are far behind the curve.
I won't cite the names of the states, but there were some states where children were speaking at less than 10 words per minute, which means that they are certainly not fluent. And if you're not fluent, you're certainly not comprehending, because by the time you've said the third word, you've forgotten the first word. So you cannot string a sentence together and make meaning of it. So the literacy was out of the question. What is really critical when you look at missions and when you look at doing programs which are focused in a time bound manner to achieve a particular outcome? Again, Prime Minister Modi said categorically by 2025 in his speech when he launched the NEP, by 2025, children should be reading at 65 correct words per minute with comprehension. These are his words, right? Now, that is an aspirational target. I can tell you for a fact that that is a target most states will not achieve, because that target is an international target. It is not based on the Akshara language. But that said, I think the important thing he mentioned there is that we have to achieve a target. Now, when you're in mission mode, it is very critical that when you design a program, you look at the evidence. What is the evidence and where is it coming from that is relevant to something that I in India am going to do? So when we worked in the states that you mentioned, we looked at evidence from two geographies. We looked at Kenya, where there was a big program around reading run by Tusome and the RTI. And we looked at Papua New Guinea, where they ran a reading booster program. Now, these two geographies, one could argue, are similar to that of India. I could not compare a program in the UK or the US or Finland for that matter. But I believe that programs run in Kenya and Papua New Guinea would be relevant to the Indian context. When you looked at those programs, there were certain things that suggest that there is an approach that you need to take when it comes to literacy, especially, right? By that, I mean, take a balanced literacy approach. What is a balanced literacy approach? A balanced literacy approach is where you are working on 5 basic principles. You're working on phonemic awareness, where you're getting the units of sounds converted into words. You're working on phonics, which is essentially getting child to map a sequence of letters. You're working on fluency, which means that you're getting children to speak, read, and write at an appropriate rate. Fourth, you're working on vocabulary, which means you're working on breadth and depth of word understanding. And fifth, you're working on comprehension, which means you're understanding the meaning of the text that you have spoken, written, or heard. This is a balanced literacy approach. So first and foremost, what we did in the states we're working in, agreed with the SCRT and agreed with the directors and principal secretaries of education that we will use a balanced literacy approach, which was not necessarily the approach that was being used prior to the launch of the mission. The second thing that we pushed on once we agreed that we're going to use a balanced literacy approach is that we will use structured pedagogy. What is structured pedagogy? Structured pedagogy is scientific, it's evidence-based, it's learner-centered, and the approach to teaching which equips a teacher with the tools, right? And very clearly defined objectives and proven methods that this methodology will actually work. There are 4 or 5 critical components to structured pedagogy that need to be implemented. First and foremost, which also actually Nipun defines very well. If you go through it and you look at what Nipun talks about, in different contexts, it actually talks about these elements of structured pedagogy. But again, there are 4 or 5. First is creation of a learning outcome framework. Like Pramodji said very categorically, you have to look at NCF, you got to look at Nipun goals, you've got to look at your own goals. What is my learning outcome framework basis which I am creating my pedagogy, basis which I'm creating the way I'm going to teach children? First and foremost, you've got to define that along with your goals. Secondly, you've got to then create teacher guides and lesson plans that go hand in hand with these learning outcomes. Today, I would argue that some of our textbooks, if you think about this, Suresh, children, grade 3 children have come back into school after 2 years of no schooling, right? We have tried to give them schooling in their geographies, but they've largely come back with no schooling. We are expecting them to read, write, and speak text of grade 3 language. It's impossible. These children don't even know what Hindi, English, Bangla, Tamil, Kannada is,
right? But we're saying aap textbook se padhiye. And I think that's a grave injustice. Anyway, coming back to my point on structured pedagogy. So, first, learning outcome framework. Second, create teacher guides and lesson plans. Third, create workbooks for children which map to the teacher guides that you have created and appropriate teaching learning material. Send them aids that they can utilize. Sir spoke about an activity based and a fun based and a play based method of teaching. Send them appropriate TLM which teachers and children can use. And fourth, most importantly, is appropriate teacher training and coaching. I think what we've done historically is कि हम 5 दिन की प्री सर्विस ट्रेनिंग दे देते हैं और 5 दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग दे देते हैं, बट वी डोंट लुक एट स्कैफोल्डिंग टीचर ट्रेनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द ईयर. अगर एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है और वो कहती है मेरा बच्चा फ्रैक्शन नहीं समझ रहा, she should not have to wait till the end of the year to find out in the next session of training कि ये fraction को मैं कैसे पढ़ा पाऊं दूसरे तरीके से. She should have a coach or mentor, somebody she can talk to on an ongoing basis to say, have you found a more appropriate way to teach fractions to my children? So you've got to create a scaffolding, coaching, mentoring cadre that helps these. So I think in terms of two things, if I were to give away, balanced literacy approach and a structured pedagogy, these are the two things that we've done in the states that we're working in. Yeah, thank you, Amata. Well articulating the your efforts. These the two key points you said: the balanced literacy approach and structural pedagogical approach. So I will come back to you on that. While doing these things, what are the different kind of problems or issues we are facing with the system and while executing the program there? I'll come back on that. And Prakhar, you have been working in Central Square Foundation, almost all 12 states, what you may have mentioned there. So all these 12 states, you have been going with the same approach and the differential approach, and how we are going about it by promoting the FLN, Prakhar? Yeah, no, I think Amitav clearly sort of articulated, the pedagogical and the approach that we take. I'll just sort of give a different lens to how we go about working in these states. So right now we are working in about 12 states. I personally work in UP and MP, so a lot of my perspective is obviously influenced from my experience in these two states. But the way we really think about it, one, any reform has to be system led, right? It has to be state led. It has to be led by the state officials. It has to be led by system stakeholders, which builds capacity in a longer term, makes make actually reform happen, make reform sustainable, right? So that's one very important thing that we believe should be happening in these FLN reform programs, right? And when you look at any system, in any system across any sector in India, you'll always have a 60-20-20 kind of a system. So there will be 20% people, like if you look at teachers, let's say all the teachers in a state, there will be 20% teachers who will be very, very motivated, and who will, no matter what mission you run, what program you run, they will teach well. They will be super amazing with the students, and really teaching well, right? So you don't need to focus there, and you don't need to provide them any tools, any resources. They will still make their classrooms very, very good, right? And the learning will happen in those places. There will be around 60%, 20%, another 20% who will be very demotivated, who will be like, every time there are new programs coming and nothing really happens, nothing works in this country. So that kind of, and they will almost be, whatever you do with them, nothing will move, right? So you give them the best tools, the best material, you give them the best apps and the best things. They will not really do a lot. The main 60% or 70% in between, who are people who just need that support, who need that coaching that Amita spoke about, who need that training,
So you provide them the right tools, the right training, the right coaching, and that is when they move from that 60 bucket to the top 20 bucket and start making things happen, right? So I think that the whole behavior change of teachers and change of teaching, improvement of teaching learning practices in the classrooms is what we believe reform is a critical sort of lever for reform to happen, right? At the end of the day, teacher is that agent of change, and the change is actually going to happen in the classrooms, right? So that's the critical sort of part, right? How you make behavior change happen. And the third bit, again, the same around the same argument that one has to really energize the system. All the missions in India, whether you look at Pulse Polio, whether you look at Swachh Bharat mission, which has been a success, you look at any successful program mission in India, all of them were really driven. There was very good political salience. All the stakeholders were motivated, energized. Everybody was talking about it, right? And that's when things really start to happen, right? So I think that is the kind of system galvanization or mobilization, or really getting stakeholders to talk about it, do something about it at the top levels of bureaucracy, at the top level of political system, and right from the principal secretary education to the teacher on the ground. So really galvanizing that system is again super important. The final bit that I think again what I would like to mention is where a lot of our programs and a lot of our government programs especially fail or do not deliver successfully is the lack of focus on implementation, right? So what we do really well is we give great inputs. We do, we would create amazing materials. We would do really good sort of, training content. We would really put a lot of focus on activities and inputs, right? Where we really fail, the things really fail is at this scale, right? Where the action really happens at the district level, at the block level, at the cluster level, and the implementation is not effective, or the quality of implementation is not that good. So talking about a teacher training in, let's say, Uttar Pradesh, we are trying to train like 4.5 lakh teachers. The scale is huge, right? And the kind of capacity that we have in the system, we almost have to create 3 different cascades where master trainers are trained first, and then that level of master trainer will do another cascade and then another cascade, right? So the whole cascading loss of learning that happens during the training is huge, right? And so the end teacher, the kind of training that teacher on the ground is getting may not be as good as what is happening at the state level, right? So just giving that example of implementation, how can we improve upon it, has to be one of the main focus area, and these are the 3 or 4 things that we really focus, in our state programs. Apart from what Amita mentioned, right, the structured pedagogy approach, the balanced literacy approach. Very good, Prakar. Nice to hearing that you're talking about the behavioral change, especially the human tendency, targeting the mid-level section of the humanity, the teachers and whoever the people there in the system, and leadership and giving the inputs and the training, structured things. They're very good. So मैं इसी बातों के ना प्रमोद जी, मैं आपके साथ आता हूँ. आप हरियाणा के अंदर जो भी आप सुन लिया अमिताभ जी से और प्रताप जी से, सो हरियाणा के अंदर आप एफएलएल प्रमोट करने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी है, आप कैसे आपको लागू किया था, आगे लेके जा रहे हैं, आपको सुनना चाहता हूँ आपसे. Thank you very much, Dr. Reddy. I fully agree with both of my co-presenters. As Amitav explained very well, and Prakhar was saying that it's not a matter of giving literacy and numeracy. It's a matter of culture change, entire change. अगर मैं बात करूं शुरुआत से, अगर हम देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट आया. अमिताभ ने जैसे प्रधानमंत्री जी की बात को लेके कहा कि समझ के साथ पढ़ना, आज तक ये किसी ने बताया ही नहीं. आज तक कहा है पिछले 20 साल से किसी ने कहा ही नहीं समझ के साथ पढ़ना है, पढ़ने का मतलब क्या है. तो ये सारी चीजें जो हैं जब हम साथ लेके चलेंगे तो परिवर्तन जरूर आएगा. स्किल की देखिए कुछ चीजें हुई हैं.
हरियाणा में जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया, अभी तो बहुत शुरुआती फेज में, किसी भी प्रकार की गारंटी करना, किसी भी प्रकार का दावा करना बहुत बहुत बेमानी होगा, लेकिन मैं बताता हूं कि बदलाव क्या हुआ है। कुछ वोकेबलरी है जो लोगों के, टीचर के, बच्चों के, पेरेंट्स के, एडमिनिस्ट्रेटर के, बीआरसी, बीआरपी, डीओ, बीओ के पास वो वोकेबलरी नहीं थी, वो वोकेबलरी आई है। मैं बताता हूँ क्या। अब ना स्किल की बात होने लगी, कंपिटेंसी की बात होने लगी है, लेसन प्लान की बात होने लगी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट की उपयोगिता को समझा जाने लगा है। आज से डॉक्टर रेड्डी, आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले जिस प्रकार का वातावरण था, वहां पे टेक्स्ट बुक को ही सबसे बड़ा टूल माना जाता था। और बच्चों को तैयार किस चीज के लिए किया जाता है? इन दी एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, जो आपका पेपर होगा उस पेपर में आपको पास होना है, इसके लिए तैयार किया जाता था। किताबों को, पाठ को, लेसन को ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, जबकि हर पाठ, हर किताब, हर लेसन क्या है, वो कंपिटेंसी है। ये बात टीचर ने बच्चों के साथ करता था, ना एबीआरसी बीआरपी करते थे, ना डाइट एससीआरटी ये बात करते थे कि ये कंपिटेंसी है। आज कम से कम स्किल की बात होती है, कंपिटेंसी की बात होती है, लर्निंग आउटकम की बात होती है। और एक एक चीज नई होने लगी है, वो ये होने लगी कि बच्चा अब कहता है कि आपके पढ़ाने के तरीके से मुझे नहीं आया, मुझे मेरे तरीके से पढ़ाइए। ये भी बात होने लगी है। अमिताभ ने टीचर ट्रेनिंग की बात करी, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों ने भी 2 राउंड की टीचर ट्रेनिंग की। अब टीचर ट्रेनिंग करवाना अलग चीज है, टीचर ट्रेनिंग का इंपैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है ये जांचना अलग चीज है। अब ठीक है, अभी जैसे प्रखर बात कर रहे थे कि 4.5 लाख टीचर है, यूपी में टीचर ट्रेनिंग करा दी। इतने बड़े अमले को टीचर ट्रेनिंग कराना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं उस अचीवमेंट को जब अचीवमेंट मानूंगा जब कैस्केड मॉडल से कराई गई इस टीचर ट्रेनिंग का 10-15% क्लास में इंपैक्ट आ रहा है, डिसेमिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको वैसे पढ़ा रहा है जैसे उसको टीचर ट्रेनिंग। अब होता क्या है, टीचर को ये लगता है, मैं भी टीचर हूं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ये तरीका सबसे बढ़िया। वो ऐसे नहीं पढ़ाता कि जिस तरीके से उसको टीचर ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाने को कहा गया है, वो उस तरीके से पढ़ाता है जिस तरीके से उसके टीचर ने उसको पढ़ाया, क्योंकि उसके टीचर ने उसको पढ़ाया तो उसको समझ में आया, उसको लगा कि यही बढ़िया तरीका है। जबकि जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, हर बच्चा अलग उसकी बात करते हैं, तो सबको अलग पढ़ाना पड़ेगा, सबको अलग बताना पड़ेगा, बहुत सारे टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग की बात करनी पड़ेगी, उनको अलग अलग सामग्री देनी पड़ेगी, उनका मिड टर्म असेसमेंट करना पड़ेगा, धीरे धीरे सारी चीजों को मैप करना पड़ेगा। मुझे लगता है सबसे पहला इंपैक्ट जो डॉक्टर रेड्डी आपने पूछा वो यही है कि ये चीज अब कल्चर में आ रही है, बिहेवियर चेंज की बात हो रही है, कल्चर चेंज की बात हो रही है, एक शिफ्ट हो रहा है कि इस चीज की ओर कि हाँ हम लोगों को करना है। दूसरी बात जो अच्छी चीज हो रही है, आज तक हम लोग, चाहे हम लोग प्रोफेसर किशन कुमार को सुन लें, चाहे हम लोग कोठारी आयोग को सुन लें, यशपाल सर को सुन लें, यशपाल सर ने तो जितना कुछ लिखा है, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल तो चाइल्ड ओरिएंटेड प्ले वे, जॉयफुल, चाइल्ड ओरिएंटेड प्ले वे, जॉयफुल, खेल खेल में सिखाओ, बिना दबाव के सिखाओ, उन्होंने हमेशा ये कहा। लेकिन क्या चाइल्ड ओरिएंटेड था या चाइल्ड ओरिएंटेड है? क्या प्ले वे है? क्या? लेकिन अब ये बात होने लगी है, देखिए स्टोरी टेलिंग जो है, स्टोरी टेलिंग अब क्लास में आ गई है, बाल गीत अब क्लास में आने लगे हैं, अब टीचर नाचने लगा है, अब टीचर कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ाता, टीचर नीचे बच्चों के साथ दरी पे बैठने लगा है। यही लर्निंग आउटकम में डॉक्टर रेड्डी कन्वर्ट होने वाला है। मैं लर्निंग आउटकम को लेकर छोटी सी बात बताता हूँ। डॉक्टर रेड्डी, पिछले 4 साल से मुझे लगा कि लर्निंग आउटकम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फ्लॉप होते हुए देखा, जब हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में सीसी किस तरीके से फ्लॉप हो रहा है और नो डिटेंशन पॉलिसी को पूरा दोषी माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि डिटेंशन पॉलिसी दोबारा लेके आइए क्योंकि एग्जाम नहीं होता, इससे बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों के अंदर भय खत्म हो गया, बच्चों का डंडा खत्म हो गया, बच्चों का दबाव खत्म हो गया, जब सारी की सारी हमने जिम्मेवारी बच्चों पे डाल दी, तब मुझे लगा कि लर्निंग आउटकम के बारे में यार पढ़ना चाहिए। और मैंने अपनी पीएचडी लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम के ऊपर, मुझे मानवरचना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी थी जानने के लिए कि लर्निंग आउटकम आता कैसे, उसके सस्पेक्ट कैसे होते हैं, उसकी मैपिंग कैसे है, क्वेश्चन जनरेशन कैसे होता है। अब हम लोग जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को बना कैसे रहे हैं, क्वेश्चन के पीछे हमारी क्या जांचने का तरीका है, हम लोग क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के माध्यम से, ये सारी चीजें धरातल पर अब नजर आनी शुरू हुई है। पुराना पढ़ाने का तरीका मुझे लगता है कि अब बदलेगा और बच्चे को बच्चे के तरीके से पढ़ाने की बात जो है वो होनी आरंभ हो गई है। देखिए इसमें नो डाउट, अगर मैं प्रखर की बात लूं या मैं अमिताभ की बात लूं, तो यहाँ पर
टीचर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। दूसरा, हम लोगों को टीचर को ट्रेन तो करना ही है, हम लोगों को यह भी देखना कि स्कूलों में से क्या क्या हटाना है। मतलब अब बहुत ज्यादा उनको ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें कहने की जरूरत नहीं है। अब ये कहना कि ये ना करें। अब अनलर्निंग का समय आ गया है। हम कहते हैं कि आप ये भी कीजिए, आप ये भी कीजिए। हम कहते नहीं नहीं नहीं, आप ये मत कीजिए। हम टीचर के लिए क्या करें मैं बताता हूं। हम सिर्फ वो चीज कर दें जिससे टीचर का समय बचे और टीचर बच्चे के ऊपर ज्यादा समय लगा सके। हम सिर्फ इतना कर दें और अदरवाइज टीचर, बच्चे, माता पिता सब जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। तीसरी चीज डॉक्टर रेड्डी, जो हरियाणा में हम लोग कर रहे हैं, हरियाणा में हम लोग आईसीटी के ऊपर काम कर रहे हैं, एफएलएन में हम लोग टीएलई टीएलएम के ऊपर, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, लर्निंग कॉम्पिटेंसी, सब चीजों के ऊपर, मैपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी चीज जो डॉक्टर रेड्डी मुझे लगता है करने वाली है, और मेरे जो बाकी दोनों साथी जो पार्टिसिपेंट है वो भी सहमत होंगे, हम लोगों ने ना पूरे सिस्टम में पेरेंट्स को कभी भी पार्टनर नहीं माना। खासतौर पर सरकारी स्कूली व्यवस्था ने ये सोचा कि पेरेंट्स नहीं, हमने ये मान लिया कि बच्चे को पढ़ाने का पूरा काम स्कूल टीचर का है। देखिए, प्राइवेट और सरकारी स्कूल में जो लर्निंग का गैप है वो क्यों है? प्राइवेट स्कूल ने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा पार्टनर माना है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान वो बच्चे की लर्निंग आउटकम, बच्चे की परफॉर्मेंस पेरेंट्स के साथ जब ये शेयर करते हैं तो बकायदा पेरेंट्स को बताते हैं कि आप ये करने में मदद कीजिए। हम लोग सरकारी स्कूल व्यवस्था ये मान के बैठी है कि हमारा पेरेंट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर नहीं है। हरियाणा मेंटर के तौर पे, पार्टनर के तौर पे पेरेंट्स को अच्छे से इन्वॉल्व कर रहा है। अच्छी बात यह है हमारे यहाँ फर्स्ट जनरेशन लर्नर हमारे स्कूलों में अब नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन नहीं है। हमारे हरियाणा में इलेक्शन लड़ने के लिए, पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए डॉक्टर रेड्डी आपको तो मालूम है 10वीं पास होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ माता पिता 10वीं पास, 8वीं पास हैं। और जब हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी को पढ़ाने के लिए एक 8वीं पास और एक 10वीं पास एनफ कंपिटेंट है, क्योंकि उसके पास एक टीचर भी है। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा पार्टनर मान रहे हैं। उसको सिर्फ हम लोग इसलिए नहीं रखे कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आएगा और टीचर उसके साथ ये शेयर करेगा कि आपके बच्चे को ये नहीं आता। नहीं, उसमें ये कहेगा कि आप और मैं दोनों पार्टनर हैं इस बच्चे की ग्रेड लेवल कंपिटेंसी अटेन कराने के लिए, इस बच्चे की लर्निंग आउटकम को जो है अटेन कराने के लिए। तो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में हरियाणा ने न केवल मॉड्यूल बनाए हैं, न केवल वर्कशीट बनाई है, न केवल वर्कबुक बनाई है, न केवल टीचर ट्रेनिंग के लिए नए तरीके बनाए हैं, न केवल हम लोगों ने हरियाणा में अपना टीचर ट्रेनिंग का पैटर्न अलग बनाया, बल्कि एक सबसे बड़ी बात जो हरियाणा करने जा रहा है, इकलौती स्टेट है हरियाणा, हम अपने सभी प्राइमरी टीचर को, 40,000 प्राइमरी टीचर को टैबलेट देने जा रहे हैं जिसमें 2 GB डाटा पर डे फ्री होगा, ताकि सारे का सारा जो असेसमेंट है उसका, जो बच्चे की ट्रैकिंग, मैपिंग, असेसमेंट, एनालाइज जितना भी है उसको टैबलेट इसलिए दिया जा रहा है कि उसको ऊपर करे। और उस टैबलेट के अंदर हम लोग एक जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी उसके अंदर दे रहे हैं, ताकि उसका समय बचे, बच्चे की असेसमेंट पे, बच्चे के टेस्ट पे सारा जो है उसका समय बचे। और वो सारी वर्कशीट्स को हम लोग जो है डिजिटाइज कर रहे हैं, ताकि टैबलेट के ऊपर एक 25 बच्चों की, 30 बच्चों की क्लास में टीचर जो है अपने बच्चे का टेस्ट उस टैबलेट से करा सके और वो टैबलेट जो उसको एनालिसिस करके बच्चे की लर्निंग आउटकम दे सके। थैंक यू। ओवर टू यू डॉक्टर रेड्डी। थैंक यू प्रमोद जी। आपको आपसे सुनने के बाद आपको पता लगा था हरियाणा के अंदर आप लोग जो भी मुद्दा आपने बताया था, कल्चरल चेंज, दैट इज ब्रिंगिंग दैट पेरेंट्स एज ए पार्टनर्स एंड आईसीटी एज ए टूल यू आर यूजिंग फॉर द लर्निंग पर्पस, एज वेल एज टीचर को पूरा समय देना है बच्चों के साथ शामिल होने के लिए, जो ना अनलर्न करना है वो। तो दिस आर द फोकस एरियाज व्हाट यू मेंशन देयर. And there is one more thing I just come to my mind that once our former Prime Minister Rajiv Gandhi was said that so whatever the money we are trying to do the welfare scheme for the people, only 10 rupees, 15 rupees are going to the actually the 100 rupees. So today's context, some states are following the direct money transfer to the beneficiary's account. So there is eliminating the in between all the layers and kind of thing. What Prakar is saying that in UP, you're talking about 4.5 lakh student teachers has to be trained, following the cascade model of training. There's a loss of the learning between the from top to the bottom level.
So there may be, you can see the possibilities of how we can directly reach the child. Okay, of course, these other layers are there, but as much as possible where the child can get the learning benefit opportunities. So now I happy to hear that all of your experience of doing the program at your respective places. Now, what are the kind of challenges briefly? I would like to know from each one of you while executing this program. So in a brief way, please, Amitabh, can I start with you? Sure, Suresh, I'll focus on, I mean, there are multiple challenges. Let me focus on two, three. I think first and foremost, when you look at missions and you look at programs that have been successful, they have been driven with a lot of political will. And I fear that if there isn't political, education is a state subject in India. While the Ministry of Education is pushing Nipun Bharat, it is for the states to implement it, to drive it, to ensure that it is successful, which is why you're seeing some states well ahead of the curve while others behind. And I think politically, it's not just a matter of giving your blessing and say, karo, but it's also doing some difficult things. Today, you know that out of 1.5 million schools in our country, roughly 3 to 400,000, which is almost 40% of our schools, 30% of our schools, which have one or two teachers in them. If you're going to run schools with one and two teachers and expect them to deliver foundational literacy and numeracy to children who are all clubbed together in a single classroom across 3 grades and be able to manage multiple grades within those classrooms, we are living in a fool's paradise. I think that needs to change, and political will only be evident if people make those decisions to say, let's rationalize teachers, let's fill vacancies, let's put a teacher in every classroom. That's one. My second thing is, I think we've got to break away from a, प्रमोद जी said it very well, पुराने जमाने में और आज भी लेसन पढ़ाया जाता है और साल के एंड पे उसका टेस्ट लिया जाता है. So what this is called teaching to the test. Teaching to the test. It's got nothing to do with learning. You get the marks and you're done. It doesn't matter what you've learned. We need to move away from a test based culture to an outcomes based culture. There has to be better ways to measure outcomes. I don't want to talk about what's happening with board reforms and what's happening with CUET, but today we've got the CUET, which is an entrance test for college. But at the same time, we also have board exams. So we have to decide, is it a board that we want to use as a criteria for college admissions, or is it the CUET that we want to use as a criteria, or is it a weightage of the two? And are we overburdening the child? We need to move away from a test-based culture to an outcomes-based culture. There are various ways for us to do that. And third point is on making sure we measure what matters. How are we utilizing data? Collecting data for the sake of data is a futile exercise. It is a diagnosis which is better not done than done at all. And my point here is that if we are collecting data, I have seen in the schools we work in, without mentioning the states that this is happening in, a teacher is expected to fill out 40 registers in a month, 40 manual registers in a month. ये डेटा दो, वो डेटा दो, ये चाहिए आज, वो चाहिए आज, और वो डेटा यूज होता है कि भी नहीं, कोई नहीं जानता, right? So if a teacher has been put into a classroom to teach, let her teach. Let us not ask for this data and that data. If we are asking for it, let us make sure we are using it for her benefit and her students' benefit, not for somebody else's benefit who's not connected to that school. So I think measuring what matters, but also utilizing data efficiently and effectively. I'll stop on the others because I'm sure others will want to contribute, but these were my three big challenges. Thank you, Amitabh. Well articulated these challenges and it is systematic issues. We have to look at it. Prakar, what do you think so? The challenges while doing the FLA? I mean, change and reform is a long and painful process, right? I think one is to really sort of keep at it. I think that is one which is very important for all of us who are working on reform, on foundational literacy and numeracy, whether the state or state government, other NGOs, education system, everybody has to realize that it is going to take time for us to see impact, for change to really happen, right? It's not a 1 year mission, it is a 5 year mission, and by end of these 5 years, hopefully change will be visible, right? Just picking up from Amitabh's sort of third point, right? It is important to measure, it is important to also use the data. The Another important element to this is,
it's important to have the right data, right? The right quality of data, to have reliable data for you to be even able to make decisions, do any course correction. And that is one very important challenge that we have experienced in the system that where we work in, right? In the programs, in the state programs where we work in. The ability of the system to create the right incentive structures for the person who is collecting the data, the person who is reviewing the data, or who is making sure that accountability is there. The incentives are not aligned. And that is where the problem starts happening, right? That the quality of data that gets generated, whether you do a student assessment or a person is going like BRCs and CRCs go to the classrooms and observe data. Many times, that data is not of good quality or not very reliable, right? So that is one very, very important challenge that we need to start thinking. How do we create trust of different stakeholders in the system on the data that is being collected? How do we improve the quality and with time? What kind of systems we are putting in place? Whether the technology that we are using is in itself be able to solve for some of these things. Whether you can do some layers of truth and verification on existing ways of assessments and evaluation, right? So that's one very important aspect, I think, that we should start focusing and we should start thinking. Is the second important thing is really just and I think again, I think couple of both Parmoji and Amita sort of alluded to it. Really making it easy for the teacher, almost start decluttering, right? Whether the material that we are sending, different materials are available from different programs that happened at different points of time. There are multiple NGOs working, for various reasons and with the right intent and with the right sort of priorities, right? But one NGO would be working in a district or 5 districts, and they are supplying some teaching learning material to the teachers in their schools. While the state would be providing another set of materials, right? And different points of time, a different set of materials goes to the teacher. And this similar situation with teacher trainings, with the technology tools. So the teacher really get confused. And when they get confused, they tend to shift to older behavior, which is, start focusing on syllabus completion, go back to textbooks and use, the chapters, right? And start, so the change we expect to happen moving towards competency-based learning, that change sort of becomes slower, or that, that reversal happens. So I think that is one very important thing that we need to start thinking about, and that's a challenge that we face in almost every state wherever we are working. There are a lot of different programs, legacy programs were there, and various NGOs, organizations working together, mostly in silos and not like sort of working towards the same mission. Yeah, got it, Pratar. Actually, you said two important points. You said that the data, whatever you're collecting, which is reliable, authenticated data kind of thing. Second thing, talk about don't confuse the teacher with too many things and kind of thing. Just focus with what is the one thing, that the teacher does the things in classroom. Pramodji, what are the kind of challenges you are facing in Haryana? छोटे शब्दों में 2-3 please. डॉक्टर रेड्डी, देखिए, जहां तक चैलेंज की बात है, मुझे अभी कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चैलेंज नहीं। उसका कारण है लीडरशिप बहुत शानदार है। मुख्यमंत्री से लेके शिक्षा मंत्री से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर और नीचे बीआरसी, सीआरसी, सब लोग जो है वो एक मिशन मोड में लगे हुए हैं। और इसी वजह से हमें कोई फंडिंग की दिक्कत नहीं है, हमें कोई सैंक्शनिंग की दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पार्टनर हैं, जो इसके अंदर एफएलएन में हम लोगों को सपोर्ट करें, अपने तीनों पार्टनर के साथ हम लोग ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे चैलेंज जो आने वाले लगते हैं, देखो, मुझे हालांकि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के लिए 2025 तक का, 2026 तक का टाइम दिया है, जो अपने आप में बहुत शानदार समय है। मुझे जो डर लगता है वो ये है
कि दबाव में, प्रेशर में लोग झूठ न बोले। गड़बड़ कहाँ होती है? जब ऊपर से दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, फेक डाटा फेंक दिया जाता है, उसको ये भी आ गया, उसको ये भी आ गया, ये एफएलएन कंप्लायंस है, हम लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप इसमें मेंटरिंग और मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्चुअली होता है क्या, जब हम मेंटरिंग की बात करते हैं, मेंटरिंग क्या है? मेंटरिंग एक साझेदारी है जिसके अंदर बीआरसी, एवीआरसी, सीआरसी जाता है। वो एक साझेदार है, वो एक टीचर का पार्टनर है, लेकिन वो होता नहीं, वो थानेदारी करता है उसके ऊपर जाकर, उसको डराता है, धमकाता है। एक ऐसा आदमी जिसकी पढ़ाने में कोई भूमिका नहीं है, उसको हमने थानेदार बना दिया, और जो आदमी पढ़ा रहा है उसको डिमोरलाइज करता है, उसको कहता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एक थर्ड पार्टी, मतलब जिसका क्लासरूम में जिसको कुछ नहीं करना, हम जब वो आके थानेदारी करता है, तो ये मुझे चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये है कि सब लोग थानेदारी ना करें। यहाँ टीचर सबसे की आदमी है, की रोल किसका? टीचर का है। वो उसका भागीदार बने, उसका साझेदार बने, उसकी समस्या को सुने। मसला क्या है? हम लोग टीचर को बता रहे हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, हम टीचर को सुन कहाँ रहे हैं? उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अरे भाई उसको सुन तो लो। आपका देखिए, जो बहुत बढ़िया मिठाई बननी है, जो 2025 में बनानी है, जिसका हम स्वाद चखने को तैयार बैठे, उसका हलवाई कौन है? उसका हलवाई टीचर है। उसको सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। उसको भाई उस मिठाई के लिए दूध, घी, लस्सी, चावल, जो जो चीजें चाहिए उसको वो सारी चीजें दें, तो यहाँ के उसको टाइमली सप्लाई हो, टीएलई, टीएलएम उसको समय पे मिले, हर चीज उसको मुताबिक मिले, उसमें किसी भी प्रकार की देरी ना हो। फिर उसको जो सुझाव देने वाले हैं, जो उसको चख के बताने वाले हैं, वो ईमानदारी से चख के बताएं कि तेरी चीज अच्छी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मेंटरिंग और मॉनिटरिंग, साझेदारी हो, थानेदारी ना हो, टाइमली डिलीवरी, जो मुझे कई बार डर लगता है। सरकार है डॉक्टर रेड्डी, आप लोगों को पता है, सरकार में प्रोक्योरमेंट को लेके, प्रिंटिंग को लेके, सप्लाई को लेके बहुत सारी पेचीदगी है। मुझे ये चैलेंज लगता है कि हम लोग टाइमली सप्लाई दे पाए, उसकी उसकी बात को सुना जाए। यहाँ पर डाइट जो है वो अपनी सही भूमिका निभाए, एससीईआरटी जो है अपनी सही भूमिका निभाए, और हम लोग टीचर के ऊपर विश्वास करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम लोगों को लगता है कि टीचर झूठ बोल रहा है। हम लोग उसको सुने, उसकी बात के ऊपर विश्वास करें, ऐसा वातावरण ना बनाए कि टीचर को झूठ बोलना पड़े। तो एपीआरसी, बीआरपी, सीआरसी, डाइट, एडमिनिस्ट्रेटर, एनजीओ, फाउंडेशन, पार्टनर, सब लोग मिलके उस टीचर को उड़ान भरने में, उस टीचर को फ्लाइट लेने में मदद करें। जो मिठाई उसने बनानी है, उस मिठाई को बनाने में मदद करें, और जो है कोई आदमी झूठ ना बोले, फेक डाटा ना आए, फेक एनालिसिस ना आए। बस मुझे ये चुनौतियां लगती है। बाकी ऐसा है कि समय बहुत अच्छा है, हम लोगों के पास खूब समय है, तैयारी ठीक ठाक है, फंड अवेलेबल है, माइंडसेट है, एक टीम बिल्ड हुई है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको हासिल कर लेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा शब्दों से बता दिया। हम जैसे एक मुट्ठी बनाता है, 5 उंगलियों से एक मुट्ठी उतना स्ट्रांग होता है, कोहेसिवनेस है ना सिस्टम के अंदर। जो जो भी लोग हैं वो सभी मिलकर कैसे टीचर को मदद करें, और आगे जो मिठाई बनाना है, जो आपको बस समय है, डोंट दबाव मत डालना। सो क्रिएट ए गुड एनवायरनमेंट, बट सपोर्टिव एनवायरनमेंट काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू प्रमोद जी। सो द लास्ट लेग ऑफ द डिस्कशन पॉइंट्स, I'm hearing of all these things of your experiences or challenges or knowing the system in and out kind of thing. So as you know that education is being a concurrent subject. It is both the national level and the state level subject. But mostly when come to the implementation point of view, the states has to take the first step towards the make things happen on the ground. So then, as being an education minister of your respective state or the country kind of thing. So ये सारे देखकर, so how do you wish to see that? So if you want to say make India is we are doing the Amrit Mahotsav, 75 years of independence, we're celebrating it kind of thing. So FLN is just one of the things that we're talking about, only the early education, the class 1, 2, 3, 4, 5 like that. But as an education system itself, how to bring that change. And as a, I know I don't want to say that the deficits of the finances resource kind of thing, but as an education minister, what is the vision and how you as an education minister you think for the change? Amitav, I can start with you. I think since this is a hypothetical question, I can say whatever I want to. I may end up being a very unpopular education minister, but I'd like to compare ourselves to China in terms of size, right? If you look at size, there's no other geography that is as large as us, as complicated a school system as us, and therefore it's easy to say Finland and Scotland, but they are the size of, one or two districts
in our larger states, right? So it's not a fair comparison. But when you look at China and you look at the numbers of schools, I think there's a telling sign there. First and foremost, India has 1.5 million schools that caters to 250 million children, right? And about 9 million teachers. Do you know the number of children that go to schools in China? It is 260 million. Very, very similar. But do you know the number of schools in China? India has 1.5 million. How many schools does China have? It has 514,000. One third the number of schools India has. And what does that tell us? That tells us that China has large schools which are well resourced. They have 15 million teachers across these 500,000 schools. So, which means they have set up large schools with good resources, with a teacher in every classroom. And I think till we solve that problem, where there is one teacher in every classroom of our country, we will never fix the problem of education in our country. So if I was education minister, I would create large schools. I would consolidate some small schools. And instead of taking the schools to the children, which what we've done over the last 20 years, I would take the children to schools. ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन टीचर वेकेंसी, टीचर रैशनलाइजेशन और टीचर शॉर्टेज की प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर सकता. सो एज एन एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड बिल्ड बिग स्कूल्स with one teacher in every classroom, well resourced playgrounds, infrastructure, labs, classrooms, beautiful facilities and what have you. And that is how I would educate my children. Very good, very good, Amita. Very rightly said that, this is a reform one has to bring in and to see that change and to move ahead, from where we are today. Prakar, what do you think about, being an education minister? What your thoughts and vision? Yeah, I know. I think it's a great question, firstly. And I mean, if I were I were an education minister, one is, I think it's super important to make this topic, make this issue, even more important in everybody's priorities, right? Whether right from the prime minister, whether FLN is in his top 5 priorities to work on, as a prime minister. So and write down below to general public, like whether this is an election issue for every parent, right? For every person on a street, in a neighborhood, in rural areas, in urban areas, whether foundational literacy and numeracy is important. So as an education minister, I would really sort of make that as a top priority, right? That's one. The second is, I think, again, which we spoke about, really create that trust in teachers, celebrate teachers, and make them an important part of nation's development journey, right? I think at the end of the day, we all realize that if at all India is to become a superpower at some point, let's say in the next 25 years, it has to become an economic superpower. That this is what will matter the most, right? If we are able to give the right education and learning to our children, then these are the children who are going to then go and contribute to the economic progress of the country, right? And all our, like our lives, we have always been sort of influenced by our teachers, right? So so I think that has to become the central theme of education ministry, that how do we celebrate and, teachers. So yeah, so those are the two sort of wish list items. Yeah, thank you, Prakar. One of the things you mentioned, that the teacher should be the center. There's a demand is coming there. They should have some title has to give to teacher, in front of the name. Everybody carries the title, but teacher, who is the one, makes the other the professional people in kind of thing. So well taken, suggestions, Prakar. And Pramod ji, आप so would like to hear आपसे आपका बात को सुनना चाहते हैं हम लोग, please. मैं ना सरकार का आदमी हूँ, आपने ना मेरे से जो क्वेश्चन पूछा इसका जवाब मुझे डरते डरते देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है. मैं जब 10वीं क्लास में था या 12वीं क्लास में था, उस समय ये ऐसे लिखने के लिए आता था कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, तो आप क्या करोगे. चलिए मान लीजिए अगर मैं भारत का या हरियाणा का शिक्षा मंत्री या जो भी मैं होता हूँ, देखिए 2-3 चीजें हैं.
जो मेरे मन, हालांकि ये बात मैं मेरे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं मैं उन तक पहुंचा सकता हूं। देखिए, सबसे पहला तो मैं जो फ्री एजुकेशन है और कंपलसरी एजुकेशन है इसके दायरे को बढ़ाऊंगा। इस समय भी देश में 8वीं तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, 9वीं के बाद फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन नहीं है। मैं चाहूंगा कि 10+2 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो। दूसरा जो है आईसीटी जो एजुकेशन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर डी 2016 में मैं इजराइल गया, तो इजराइल के एक स्कूल में हम लोग घूम रहे थे, तो वहां पे एक 5वीं क्लास, ध्यान से सुनिए आप, 5वीं क्लास के बच्चे से मैंने पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। 5वीं क्लास का बच्चा कह रहा है कि आई वांट टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ इजराइल, आई वांट टू स्ट्रेंथन द आर्मी ऑफ इजराइल। 5वीं क्लास का बच्चा बिल्कुल क्लियर है। अब क्या इस प्रकार की कल्पना हम हिंदुस्तान में कर सकते हैं कि 5वीं क्लास का बच्चा कहे कि आई वांट टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी के लेवल पे, भारत के लेवल पे ये बात हो रही है। इत्तेफाक से हम इसी हफ्ते वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बने हैं और हम लोग चौथी और फिर तीसरी के बारे में सोच रहे हैं। ये डॉक्टर जी तभी संभव है जब हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इतने समय से, कोठारी आयोग के समय से ये बात कही जा रही है कि जीडीपी का 6% इकोनॉमी के ऊपर, सॉरी, जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर मुझे ये अवसर मिलता तो मैं प्रयास करूंगा जो है अब सरकार के माध्यम से कि जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च हो। और ये खर्च नहीं है। देखिए, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की बात अगर मैं करूं, आपने कभी उनको बोलते हुए सुना तो एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, वो हमेशा निवेश की बात करते हैं। एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो एक निवेश है, वो खर्च नहीं कभी भी कहते। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर ये निवेश कर रहे हैं। और सचमुच अगर कोई देश अपनी जीडीपी का 6% जो है वो निवेश करेगा तो इसका आउटपुट आएगा। अभी से अमिताभ बोल रहे थे कि चाइना में बड़े स्कूल है, बिल्कुल ठीक बात है। छोटा स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल कुछ भी नहीं दे पाता, बड़े स्कूल जो है वही अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो जो चाइना है, चाइना अपनी जीडीपी का बड़ा ठीक, हालांकि 6% नहीं है वो भी, लेकिन बड़ा वो 5%, 4.5-5% है, क्योंकि उनकी जीडीपी बड़ी है, उनकी जो इकोनॉमी बड़ी है, तो 4.5-5% भी अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो मैं इन 2-3 चीजों के ऊपर काम करूंगा, फ्री एजुकेशन के ऊपर काम करूंगा और आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा, फिलहाल जो है वो 3-3.25% के आसपास है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का वो 10-11% के आसपास है। लेकिन अच्छी बात है कि जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, अब की बार हमारा तो टोटल एक्सपेंडिचर का 20% जो है हम लोग अपने एजुकेशन में निवेश कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी, जो जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है। तो हरियाणा जो है अपना 20% जो अपने टोटल एक्सपेंडिचर का एजुकेशन के ऊपर खर्च करा है। लेकिन जो अगर मुझे ये अवसर मिला तो मैं जीडीपी के 6% के आसपास जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रमोद जी। आपका जो भी विश्वास है वो हो जाएगा, सभी लोग वो एक्सपेक्ट कर रहा है। जो अगर 6% का जीडीपी मिल जाएगा देश में, स्टेट्स में, जो अमिताभ कह रहा था, जो रिफॉर्म्स लेके आने सिस्टम में, जो प्रकार बता रहा था, टीचर को पुट द सेंटर काइंड ऑफ थिंग एंड फ्री एजुकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, सो ऑल these things can happen. You can see the hope of the positive things in the coming days. There is a question in the chat box. So, well said. Please share the plan for those students who are in middle classes, not fall as per FLN competency. I couldn't understand the last part. If there is a gap in FLN competency, I understand like that. If there is a gap and how to address the somebody in the middle school. डॉक्टर रेड्डी, ये क्वेश्चन किससे है? There is a another colleague, so Akram. ओके, मुझे उत्तर देना है? ना, कोई भी दे सकता है। ओके, अमिताभ आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, हम जो मैं आपको थोड़ा आई टेल यू इफ आई अंडरस्टैंड मिडिल क्लासेस, तो इसेंशियली जो निपुण भारत कहता है वो ग्रेड 3 के एंड तक है, राइट? तो इसका मतलब आप मिडिल क्लासेस की बात जब कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 4, 5, 6. We've actually looked at this, and I think the way we are trying to address this is through a bridging strategy. Not only for grade 4, 5, but हमारी grade 3, जैसे मैंने पहले बोला अपने points में,
ग्रेड 3 का भी बच्चा अभी आ रहा है, वो ग्रेड 1 की कॉम्पिटेंसी के बिना आ रहा है। वो कभी स्कूल नहीं गया, उसने कभी किताब नहीं देखी, उसने कभी अक्षर नहीं पढ़ा। तो अगर हम उसको ग्रेड 3 के लेवल पे लाना चाहते हैं तो हमें पहले उसको ग्रेड 1 का लेवल दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए एक ब्रिजिंग अप्रोच लेना पड़ेगा। व्हाट डज ब्रिजिंग अप्रोच मीन? इट मीन्स दैट ओवर टाइम मैं इस बच्चे को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 और ग्रेड 5 तक ला पाऊंगा। एंड इफ यू लुक एट व्हाट सम ऑफ द डेटा इज सेइंग, ये करने में बहुत वक्त लगेगा। ये नहीं कि मैंने 3 महीने की कोई रिमीडियल क्लास उसको दे दी, जो 2 साल में उसका पढ़ाई है उसको 3 महीने में कर दिया और फिर ग्रेड 3 पे मैं ले आया। सो इफ स्टेट इज सीरियस अबाउट ब्रिजिंग दीज गैप्स लाइक अकरम इज सेइंग, then it will take at least a minimum of 3 to 4 years for you to bring a grade 4 child to an age appropriate level. इसका मतलब चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं में आप N-1 ग्रेड की, N-2 ग्रेड्स की पढ़ाई कराते जाएं इस बच्चे को, क्योंकि ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की हम बात कर रहे हैं ना, वो फाउंडेशन है। आप अगर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अगर आपने बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाया, आप ऊपर के माले नहीं बना सकते। तो अगर ये बिल्डिंग और बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर खड़ा नहीं होगा, ये बिल्डिंग टूट के नीचे आएगी। सो माय पॉइंट इज दैट can we push the state to look at doing N-1, N-2 bridging at respective grade levels, moving away from the current curriculum and syllabus to a more truncated curriculum? ये सिर्फ कोविड के टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, कोविड के बाद की प्रॉब्लम है कि हमें करिकुलम को ट्रंकेट करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें वो कॉम्पिटेंसीज को पे ध्यान देना पड़ेगा जिसके बेसिस पे बच्चा आगे जाके पढ़ पाए, सारी competencies पे नहीं. So we will have to do a little bit of mapping of which are the core competencies which need to be addressed in the foundation years. How do we do a truncated curriculum? So you'll have to look at what curriculum was done in 1 and 2 so that that carries on, and then doing an N-1, N-2 type bridging. This is what I would recommend. Yeah, thank you, Amitabh, the session. And this, whatever the discussions happened here, it was live telecasted through YouTube also. It is recorded, and the people who are participated in during discussion here and those who watch on the YouTube will remain there, and other people also can hear your voice, and so they can be a part of this journey. And we together collectively try to bring the transformation in the education system. Thank you for your participation today and giving your time and sharing your thoughts and experiences and vision for the future. Thank you once again to all of you. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Reddy. Thank you, Amitabh. Thank you, Prakhar. Thank you very much. Thank you, Thank Pramod. you. Thank you, Prakhar. Thanks.